Hi everyone, hope you're doing well. I'm making this video uh, quickly to tell you what market depth is and how to use it to find and identify supports and resistances. और इससे ये पता चलेगा कि एक्चुअली में रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता कैसे है in terms of market depth and in terms of buyers and sellers, right? So currently I'm viewing Lupin, which is a pharma stock. It's a good stock because it has a lot of volume. A lot of people trade it. It's a reliable stock. So you see that this is the market depth, right? If you close it, this is your watch list, and you can, by clicking on this market depth button, you can see the market depth, right? I'll tell you what this means. These are the offers. These are the people who are trying to sell. ये बेचने वाले लोग हैं जो चाहते हैं इस वक्त मार्केट में जो selling price है that is 1011.8. Now it's 1011.95 and so on. It will keep changing and this is the quantity, right? This is the quantity. So आप देख सकते हैं कि on 1012 there are about 1988 people, right? So there are so many sellers at 1012. That would mean that this is a resistance because जैसे ही प्राइस इधर पहुंचेगा people start selling, right? And यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रही है। अब आप ये देखेंगे कि ये एक इस कैंडल का टॉप ये है एंड यहाँ पर भी ये इस समय ये एक माइनर पीरियड की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे दिन की रेजिस्टेंस है, बट आप इंट्राडे में जब आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए एंट्री लेना चाहते हैं एक वॉलेटाइल स्टॉक में, देन यू हैव टू सी दैट दिस इज द रेजिस्टेंस, राइट? तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जो रेजिस्टेंस है वो अब उससे नीचे चला गया, राइट? उधर रेजिस्टेंस थी, उसने उसको टच नहीं किया एंड इट वेंट डाउन। इसलिए सम पीपल सेल एट 1011, उससे 1 रुपया नीचे ही सेल कर दिया बिकॉज दे नो कि 1012 हिट नहीं होगा। और हिट करने के लिए अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए देयर हैज टू बी अ गुड अमाउंट ऑफ बाइंग प्रेशर, राइट? और इस समय बाइंग प्रेशर कुछ बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है। बाइंग प्रेशर है, पीपल आर विलिंग टू बाय 1100 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं at 1010, right? So buying pressure जो है इतना ज्यादा नहीं है। अब selling pressure फिर से 1011 पर it's 1262, so there are a lot of sellers. तो 1011 को break करना would be tough until and unless, let's say, Nifty, right? So Nifty is a cumulative chart, right, of 50 indexes. And Nifty अभी जब negative जाता है then a lot of trends, lot of sectors and lot of stocks go down. जब निफ्टी नीचे जाता है तो बहुत सारे स्टॉक्स उसको कॉपी करते हैं। अब निफ्टी ऊपर जा रहा है, राइट? ओके, इट्स स्टिल गोइंग डाउन, इट्स कंसोलिडेटिंग एट द मोमेंट। सो बेसिकली व्हेनेवर जब ये रेजिस्टेंस तब टूटेगी व्हेन निफ्टी स्टार्ट्स टू गो अप, राइट? बट इस वक्त निफ्टी इज गोइंग डाउन एंड इस वक्त सपोर्ट टूटेगी। तो रेजिस्टेंस सेलिंग साइड पर होती है हमेशा। जहां पर भी बहुत ज्यादा सेलर्स होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है एंड जहां पर भी बहुत ज्यादा बायर्स होते हैं वहां पर सपोर्ट होती है, राइट? सो जब स्टॉक गिर रहा है, गिरते 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 उसको यहाँ पर एक सपोर्ट मिली है। इस पॉइंट पर सपोर्ट मिलने का मतलब था कि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स थे, राइट? एंड यहाँ पर जाकर ऊपर वो उठ नहीं पाया, राइट? तो यहाँ जब पर जाकर अगर वो ऊपर नहीं जा पाया तो मतलब यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिली। रेजिस्टेंस मिलने का मतलब है बहुत ज्यादा सेलर्स थे एंड सपोर्ट मिलने का मतलब है बहुत ज्यादा बायर्स आ गए, राइट? तो इस तरह से आप हाउ कैन यू यूज दिस? आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? तो आपको पता है कि लेट्स से 1008 पर बहुत ज्यादा बाइंग है, राइट? बहुत ज्यादा बाइंग का मतलब है, ये लुपिन का चार्ट है। लुपिन में आप देख रहे हैं कि इस वक्त 2289 स्टॉक्स की बाइंग है। अब ये एक सपोर्ट बनेगा, यहां से प्राइस नीचे गिरना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप 1008.5 पर एंट्री लेते हैं एज अ बायर, आप देखेंगे 1008.5 पर 600 बाइंग क्वांटिटी थी और किसी ने बाई किया, राइट? एंड इफ यू बाय एट दैट प्राइस तो उसके बाद एक आपको थोड़ा सा श्योरिटी मिल सकती है कि मेरा प्राइस नीचे नहीं जाएगा, राइट? बिकॉज आपके पास वहां पर एक सपोर्ट बन रही है। So this is how you can find your entries using market depth and support and resistance. Um, if you find this confusing, let me know in comments. I can make another detailed video on this. But this was something I was observing in the live market and I thought I would share with you. अगर आपका कोई इसके बारे में क्वेश्चन है, just let me know.